Okay, good morning students. आज आमे डिस्कस करिया क्लास 7 CBSE chapter 1 mathematics. Okay, chapter 1 integer chapters. I will try to complete this chapter. पूरा चैप्टर पढ़िया पे चेष्टा करछि जति हो बाकी नेक्स्ट पार्ट रे हम पढ़िया. ओके, चेष्टा करछि कंप्लीट कर. सो टुडे विल डिस्कस द इंटीजर्स. ये जो इंटीजर्स रे हमर असला रिप्रेजेंट कोन. Now you know that before that we will discuss natural number. Natural number kono. What is natural number? You know that is n starting from 1, 2, 3, 4 like that. Whole number w 0, 1, 2, 3. तो बिफोर इंटीजर आम इंटीजर पढ़ा आगे आउ दुटा नंबर अच्छी पूरा नंबर सिस्टम रे गोटे नेचुरल नंबर आउ होल नंबर राइट. तो नेचुरल नंबर है कौन ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. आउ होल नंबर अच्छी द ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 दैट इज नोन एज होल नंबर. दैट रिप्रेजेंटेशन इज w. सो हियर नेचुरल नंबर होल नंबर. नेक्स्ट वन इज इंटीजर. इंटीजर तो इंटीजर इज z और i. ओके ए मो बोर्ड रे लिखो से द हैंड जो राइटिंग ता लेटर साइज छोटा देखा जाउची. तमे तमरो जो मोबाइल रे हला टिके जूम करियो पूरा क्लियर देखा जियो सब कंप्लीटली पिक्चर से तो फिगर से तो सब देखा जियो बोर्ड रे अलग देखियो हला. तो मु चाहूची छोट लगे पूरा बेसी कथा एट अ टाइम लिखिया भाई बोर्ड रे सेति में छोटे करछ लेटर राइट. सो z is all negative and positive integers. All negative and positive whole numbers. All negative and positive whole numbers are called integers. So that means in integers there are two types of numbers are there. One is positive, one is negative, right? Including 0. So 0 to onwards both sides, right side, left side. Always in the left side towards you. That always in the left side from my left side. Left side is what? Negative number. Right side is positive number. Okay, so this is positive from this part. That part is positive and this part is negative, right? So gote plus, gote minus, and this is a 0. Finished. So this is about the integers. Over. बुझेला इंटीजर्स कौन सबतक पॉजिटिव ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स आर इंटीजर्स. ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दैट इज नेचुरल नंबर. ऑल काउंट नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 दैट इज कॉल्ड होल नंबर राइट. हला स्पीड को मु जति की पाउची स्पीड भी पाउची स्लो भी पाउची. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड 0 टुगेदर इज कॉल्ड होल नंबर. Then integers कौन वाला integers होची फर्स्ट रे कहलना all negative and positive whole numbers are integer. सॉरी गला एबे तारो properties. Now we discuss the properties of the integers. Okay, ये properties of integers what we discuss the properties of integers. Number 1, properties closure. If that is a belongs to z, b belongs to z, then if a belongs to z, that means a is an integer, b is an integer. If a is an integer और b गोटे इंटीजर ही थिबो देन कौन कौन होची क्लोजर बोर्ड रे ना तरा एडिशन देखियो. क्लोजर बोर्ड फॉर एडिशन. देन फॉर एडिशन the if a is an integer, b is an integer, then a plus b also belongs to z. example 3 गोटे इंटीजर 4 गोटे इंटीजर तो 3 plus 4 answer also 7. Therefore 7 also belongs to z. बुझेला. if a is integer, b is integer, a plus b also integer. यदि a गोटे इंटीजर कि b गोटे इंटीजर त तनको ऐड करले भी से माने गोटे इंटीजर हेबे. बुझेला. ता माने if a is integer, b is integer, then a belongs to z, b belongs to z, then a plus b also belongs to z. That means if a is integer, b is integer, then a plus b also integer.
एग्जांपल देली 3 गोटे इंटीजर 4 गोटे इंटीजर ताको हम ऐड कले जो 7 होची 7 भी गोटे इंटीजर बुझियला तो ये हला दिस इज फर्स्ट क्लोजर दे फॉर एडिशन दिस वर्ड इज क्लोजर तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन closure property for subtraction a minus b also integer. Let's try. That is equal to suppose 3 minus 4. If answer is minus 1, therefore minus 1 belongs to z. Yes. If a is integer, b is integer, a minus b also integer. If 3 is integer, 4 is integer, 3 minus 4 answer is minus 1. So minus 1 also integer. बुझियला? Then asla multiplication. For multiplication that is equal to a into b belongs to z. A into b belongs to देखो तो suppose मैं कभी 3 into 4 that is equal to 12 therefore 12 belongs to z therefore 12 belongs to z बुझेला a जदि इंटीजर हिथिबो b जदि इंटीजर हिथिबो सेमान को ऐड कले सेटा भी इंटीजर हबो सबट्रैक्ट कले भी इंटीजर हबो इनटू कले भी इंटीजर हबो डिवाइड कले इंटीजर हबोनी तो फॉर मल्टीप्लिकेशन ये सपोर्ट कला ये फॉर डिवीजन that is a divided by b not belongs to z तो 3 एग्जांपल यार एग्जांपल दोचे हला यार एग्जांपल अलगा देबी यार एग्जांपल केमते ना सपोज that is 0 belongs to z 5 belongs to z therefore 5 by 0 no 5 by 0 also not belongs to z ମୁଁ 3 रे भी सेम एग्जांपल भी आउट दे देबा चलिबो 3 by 4 also not belongs to z 0 5 by 0 is not belongs to z 5 by 2 भी 0 z 5 by 0 भी 0 नहीं ओके बट 0 by 5 भी 0 to z तुमको सर डिवीजन तो 5 0 by 5 आंसर 0 हो ना no this is also integer therefore 0 belongs to integer but जे जो रूल टा माने सपोज डिवीजन रो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन क्रिएट करछ माने तो सब नंबर को सपोर्ट करिया दरकार गोटे यदि मिस करियला दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ओबे दैट रूल ओके सो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट ओबे द डिवीजन रूल सो ये सपोर्ट तीनटा सपोर्ट कला एटा सपोर्ट कला नहीं दिस इज division not supported so the closure property if a is integer b is integer a plus b also integer a minus b also integer a into b also integer a by b is not an integer so this is all about the closure property of addition subtraction multiplication division so final conclusion here once again I will just do this final conclusion for this that is equal to closure property of addition okay you can write okay so this is next closure property of addition subtraction multiplication division completed then you can say what if a belongs to integer b belongs to closure property this is your addition subtraction multiplication division that is addition subtraction multiplication division addition subtraction multiplication division तो addition support कला subtraction हला multiplication भी हला division हला नहीं right एवला टेबल टे तमे मन रखिबो addition the closure property of addition for the closure property of addition for integers satisfied the closure property of subtraction for integers satisfied the closure property of multiplication of integers satisfied the closure property of division for integers not satisfied हम भावछ साज एते स्पीड केमते कहउछ ना एटा मु कहिला वाले मु निजे ध्यान दोछ कोन कहउछ सही को फोकस करके प्रेजेंस ऑफ माइंड रे कहले तमे कथा कहि परिबो राइट तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन closure property of integers for addition satisfied closure property of integers for subtraction satisfied closure property of integers for multiplication satisfied closure property of integers for division not satisfied clear तो ये सही गला देन नंबर 2
commutative properties, commutative properties. तो commutative properties if है मुझे speed को check try करो बुझिया पे if है that is if A belongs to Z, B belongs to Z, then A plus B equal to B plus A minus B not equal to B minus A into B equal to B into A divided B is not equal to B divided by A. यार एग्जांपल देखो केमती करूची मु यार एग्जांपल देखो हमर एटा होची आज चेष्टा करची मु जति हला हला नाले काली करबी राइट व्यस्त होवा दरकार नै किछि तमे क्या गोटे क्लास रे करबी तमे देखो मार्क करबो फुल स्टडी तो मु एटा को एबे सिस्टमैटिक करिया चेष्टा करची चैप्टर 1 7 नो देखिबो दिस इज integer chapter 1 integer class 7 CBSE. This is part 1 video, part 2 video maybe after 2 days or 4 days. Okay, so this is commutative properties. If A is integer, B is integer, then A plus B also A plus B is equal to B plus A. Example here example de hochi la if example 2 belongs to Z minus 3 belongs to Z, right? A plus B. So 2 plus minus 3 and is equal to minus 3 plus 2. Sorry, B plus A plus B. Then that is equal to okay 2 minus of minus 3 is not equal to minus 3 of minus 2. Okay, this is minus 2. So 2 minus that is 2 plus 3 answer is equal to minus 2 minus 3 minus 2 finally 5 is not equal to minus 5. Okay, so this is not equal, right? So 2 plus 3 is not equal to minus 3 minus 2. So ये भी satisfy गला बुझी पालो तब देखो minus 3 जो भी नंबर लो any number integer any number तो A plus B is not equal to B plus A 5 plus 3 जहाँ sorry माइनस कथा को A minus B is not equal to B minus A 5 से minus 3 जहाँ 3 minus 5 से है okay 3 minus 5 is not that one, so this one also not correct. Similarly 3 ऐसा ही हम डिटेल अच्छी ना तो A plus B plus A minus B minus A तो A into B suppose into करिए ना तो 3 into 4 जहाँ 4 into 3 से that means 3 into 4 is equal to 4 into 3. 3 plus 4 is equal to 4 plus 3. 3 minus 4 is not equal to minus 4 minus 3. 3 by 4 is not equal to 4 by 3. So that means, so here that is 3 into 4 is equal to 4 into 3. ये correct. So ये not satisfied. ये भी correct. Then 3 by 4 is not equal to 4 by 3. The commutative उल्टा the order change कले भी काम करते हो ना कि हम लोग कथा कौन से statement दोचे तो भात खाइबा हाथ धोइबा हाथ धोइबा भात खाइबा हाथ धोइबा हाथ धोइबा भात खाइबा बुझिबा लागि छै हाथ धोइबा भात खाइबा हाथ धोइबो तो ओल्टे के स्टेटमेंट लिखिले ओल्टे के जदि हम स्टेटमेंट लिखुचे ताहाले हम स्टेटमेंट काम करछ ना करले हाथ धोइबो भात खाइबो हाथ धोइबो भात खाइबो बोले दिया भात खाइबो हाथ धोइबो हां भात खाइ हाथ धोइबो पड़े ना yes like that so हाथ धोइबो भात खाइबो हाथ धोइबो भात खाइबो हाथ धोइबो भात खाइबो हाथ धोइबो तो पूरा मैच कला एकदम एक्सीलेंट दैट इज इक्वल टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ओके बट जता पिंदिबो सॉक्स पिंदिबो जता पिंदिबो सॉक्स पिंदिबो जता पिंदिबो चलिबो जमा चलिबने अरे जोता पिंदिबो सॉक्स पिंदिबो केम देबो आगो सॉक्स पिंदिबो तापर जोता पिंदिबो ना ओल्टे लेक हबो की हबोने तू दि पागल हेतु ताले मिट पिंदिबो हां सेमते हबो की केबे हबोनी जा ऑर्डर जल्दा हबो ना लाइक दैट ये विषय यदि ऑर्डर चेंज हला ताहाले सेटा कोन हबो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यदि होउची ऑर्डर चेंज कले ताले कम्यूटेटिव मानिला जदि ऑर्डर ना होउची दैट इज डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव एग्जैक्टली सेम थिंग a plus b is b plus a minus b is not equal to b minus a into b is equal to b into a by b is not equal to b by a हला
तो ये तो मुझे यूट्यूब रे पढ़े जी काफी नुहे कि ऑफलाइन पूरा जबरदस्त पाठ पढ़ा होमी पढ़ेला भाया माने बहुत कथा डिस्कसन होचे यूट्यूब में सेटिंग कर पारुनी मोर तो प्रोफेशनल यूट्यूबर नुहे मु एडिटिंग फेडिंग होई से यात्रा कर पारुनी जस्ट पूरा जेमती पूरा डायरेक्ट पूरा देसी पूरा नेचुरल नु पढ़ाए तेणु से जदि तुम आहरी टिके क्लैरिटी हाँ दरकार आउरी अधिक कथा बुझे अच्छे डाउट मुझे क्रिएट होची पचाई पारन तो आइदर तुम मत कमेंट रे पचार सुधा नहीं किंबा मत गोटे कम कर तुम जदि आसो आइकन ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर आसीपर ताहले किंबा मत फोन कर डाउट क्लियर अच्छे पचार बुझेदेवी आस देखा कर प्रॉब्लम ना है तो आम किसी फ्री पैकेज भी रोचे से कथा बुझीपर तुम क्लास मो पाखे हेल्प पाइपर है किसी पिला पूरा हेल्प पूरा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम ट्यूशन दौचु तो सेटा भी तुम आसिक देखिपर मत फोन कले जानपर कौन हो क्या ना कारण मोर क्वालिटी पूरा बिलीव करे डिसिप्लिन क्वालिटी मुझे 100% बिलीव करे ए फालतू पिला सहित हे फे मस्ती टाइम वेस्ट करे मोर पसंद नहीं है प्लस टू दी पॉइंट काम मुझे जानी परफेक्ट जानी क्लीयर जानी पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लीयर अच्छे तो मो पिला क्लीयर बुझा चेष्टा करी को पिला बुझी पारला गोटा बुझी पारला से पिलार ब्रेन उपर डिपेंड कर सब 5 गुण सामान नुहे गोटे पिला थे कहले बुझे आउ 50 थर कहले भी से बुझीपार ना इम्पॉसिबल मुझे जो भी टीचर पढ़ा बुझे पार इट्स माय चैलेंज कारण से ब्रेन से अच्छे आम के लोड दबा बुझीपार समस्त सामान ब्रेन कि समस्त कौन थे सेमती ना ओके चलो जहाँ भी हो तुम जब किसी बुझे अच्छे यहाँ आउट एक्सट्रा तुम आसिक आइकन ट्यूटोरियल खोर्धारे मो से देखा कर कथा ओके ये सरला ये 21 प्रॉपर्टीज बनईदे यदि यार कर बुझा देखा बोर्ड ठीक देखा तो हाँ यस ये देख बोर्डटा तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो एडिशन सपोर्ट कला सब्ट्रैक्शन ए पेज नॉट कलानी मल्टीप्लिकेशन कला डिवीजन कलानी राइट ए बॉक्स बहुत कम दबो तो एडिशन यस सब्ट्रैक्शन नो मल्टीप्लिकेशन यस डिवीजन नो तो यार कहली सब एग्जांपल दे देली तो 3/4 is not equal to 4/3 3 minus 4 is not equal to 4 minus 3 3 plus 4 is equal to 4 plus 3 3 into 4 is equal to 4 into 3 ओके दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सरीगला तो ये कम्यूटेटिव वाला आम पढ़िया कौन कम्यूटेटिव जाऊँगी तापर तुम कौन जाइए कम्यूटेटिव वाला क्लोजर बॉडी वाला एसोसिएटिव तो बहुत कथा अच्छी मतलब लगे आज देखिए मोर ऑलरेडी वीडियो 17 मिनट हो सारा 17 मिनट तो बेसी लॉन्ग वीडियो हम करा चाहूनी ठीक अच्छे आज आम जोड़िया पेपर कहवा तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़िया एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूट 3टा पेपर तो 3टा वीडियो करी गोटे वीडियो सर टाइम अधिक नब मत भी कंटिन्यूअसली दादा पढ़ेगा टाइम पैकेज अच्छे 10 मिनट 15 मिनट लगा वीडियो पढ़ाए 17 मिनट ऑलरेडी हो सारे ओके तो थैंक यू दिस मच आज 2टा प्रॉपर्टीज पढ़ेली कम्यूटेटिव और सेमती पूरा कंप्लीटली चैप्टर 7 टा सॉरी चैप्टर 1 टा क्लास 7 सीबीएसई में पूरा सार देवी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जा करके सार देवी तुम देखो कंटिन्यूअसली फॉलो अप करिवो और जदी डाउट क्लियर अछि बुझे अछि मते कमेंट लिखि दबो तो गोटे मु कहूची सीबीएसई रो गोटे पिला यदि 7 क्लास रो कोनसी ट्यूशन दरकार नै जेपंत भाबंतु तुम संगे मनोज पंडा सर अछंती आ आइकन ट्यूटोरियल तुम संगे अटैच अछि तुमको ट्यूशन जमा करिया को पड़िवो नाही 7 क्लास रे जदी तुम मो संगे कांटेक्ट रे YouTube रे खाली फॉलो अप करछ राइट कंटिन्यू एंड कैरी ऑन आई विल हेल्प यू ओके थैंक यू